this is Aarti Khetarpal and we're speaking from the capital of the country, New Delhi. Yes, New Delhi, a city which is rich in heritage, art, culture, and a lot of good-looking actors. One such actor who left his home 30 years back and has been a successful actor, director's bank on in the Indian cinema is none other than Pawan Malhotra. Thank you so very much for joining this show. Pleasure. Thank you for calling me. And we also have with us an actor, producer, life healer and coach, Mr. Aushim Khetarpal, who's been promoting sports for decades. Thank you so very much for being a part of this show too. Why I'm emphasizing on Delhi is because we're a part of the Diorama Film Festival, which is happening in Delhi, an initiative to make a market in this city. So Pavanji, when you shifted from New Delhi and when you shifted to Mumbai, I'm sure you left it because of lack of resources that the city has to offer an artist like you, right? Or no? When you say lack of resources, I don't know if that word is right. But for films, Hindi cinema, you go to Bombay. Right. You know, of course, Hindi films. Why I'm saying in India, all over India, they make some odd 800, 900 films every year. You know, so of course Bombay is a place if you want to be part of Hindi cinema. So I went to Bombay because of that. But it must have been quite a struggle taking the decision of going away from your family, or your family shifted with you? No. My family never shifted. In fact, of course, I mean, there was not a major opposition from my parents, but parents are concerned, you know, they always feel that it's a business or it's a job which, I mean, every time you have to find a new job and there's no security, and what is the percentage of people really making, and I came from a business family. You know, my father was in machine tools business. In fact, when I used to do theatre, his concern was कि drama ही करता रहेगा, you have to learn this business. You know, जब गुस्से में होते थे, he used to say कपड़े का business नहीं, ना पर बेच दिया. Machine tools, you have to deal with engineers, you have to learn this business. You know, and we had our own brand and we were wholesalers. MBC brand, now it's Metro. The brand is called. My brother runs that. Metro, And the shoes? No, the machine tools. Oh, okay. And I don't think I was, or even today, I business नहीं आता है. And luckily इतनी acting चल गई कि मैं अपना खाना जुटा सकता हूँ और सर पे छत है. So I'm thankful to God, and my journey has been interesting. I've done different kind of work and, you know, different characters. But you started off acting by doing nukkar natak and street plays, and co-curricularly you must have been very active. So I'm sure you must have been influenced like a normal individual is influenced by looking at your movies. What inspired you to become an actor, not a businessman? Because business मुझे आता नहीं था. या acting अच्छी आती थी? No, उस ऐसा थोड़ी कि acting बहुत अच्छे से, acting कभी भी अच्छे से नहीं आती है, आज भी नहीं आती है. बिकॉज एवरी टाइम आपके पास जब कोई किरदार आता है वो नया किरदार होता है, नई कहानी होती है. तो अगर आप एक्टर अनलेस यू हैव सर्टेन स्टाइल एंड पीपल लव इट, देन फिर आप करते रहिए जब तक लोग उससे बोर नहीं होते, या आप चला सकते हैं, यू नो, या उसमें और चीज़ें जोड़ सकते हैं, कुछ वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है. बट इफ यू आर एन एक्टर दैट यू आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, दैट एवरी स्क्रिप्ट यू रीड एंड यू गो थ्रू व्हाट इट वांट्स टू से, एंड जितना आपको समझ में आता है, जितना आप कोशिश करते हैं, जितना नज़दीक पहुंच सकते हैं आप. आई ऑलवेज से 100% तो कोई भी किरदार नहीं, आर्ट में 100% कुछ नहीं है एक्टिंग में. यू नो, देयर इज ऑलवेज मोर इफ यू लुक इनटू इट. इसीलिए व्हेन यू रीड योर स्क्रिप्ट एंड योर कैरेक्टर, इट डिपेंड्स व्हाट इज गुड एक्टर. आप उसमें उस किरदार में झाड़ी बुश देखते हैं या पेड़ देखते हैं या जंगल देखते हैं. देयर इज अ सीड, यू नो, एक प्याले में बहुत सारे सीड्स पड़े हैं, उसमें आप जंगल देखते हैं कि नहीं, पर वो स्क्रिप्ट में ही होता है. जैसे long back somebody trying to be in a very profound talking about cinema, they said, oh, that person was good but he couldn't go beyond the script. There's no such thing going beyond the script. Be in the script and get it is from the script only. The seed is there only, you know. Say he couldn't see more than this which was there, but you can't say beyond the script. क्या होता है वो कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि यू नो कोई बैठे हैं और एक थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज उसको कर रहे हैं, यू नो. अरे सिनेमा तो हार्ट और ब्रेन का आप
कैरेक्टर है, Yeah. आपको वो पकड़ के चलना है, यू नो. But when you talk about mind and heart together, like I heard you saying one of the shoots कि अगर तुमको समझ आ गया तो तुम कर लोगे. Like I've seen you going on set sometimes and you don't really get psyched up. Oh my god, I have to do these lines. I have to do everything. For you is very impromptu. Even on set, कि हो जाएगा, चल जाएगा, कर लेते हैं. So it's like No, but you should know your dialogue. yeah. I'm not saying कि कुरान की तरह रटना है, यू नो, कोई श्लोक नहीं है कि वैसा का वैसा ही बोलना है. लेकिन इफ वाइल यू आर इन द सीन, इन द शॉट, एंड आप गोते खा रहे हैं, यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट वर्ड, Not gonna come up. तो आप बाकी डिटेलिंग कैसे करेंगे? बाकी जो डिटेल्स हैं, यू नो, वो आप कैसे करेंगे? बिकॉज योर होल फोकस इज मेरी नेक्स्ट लाइन क्या. ऑफ कोर्स व्हेन एक्टर्स से ना, आई वाज सो मच इनटू दैट कैरेक्टर दैट आई फॉर 3 months मैं वही था, वैसे ही बिहेव कर रहा था. झूठ बोलते हैं आप. मैं अगर चिल्ड्रन ऑफ वॉर कर रहा हूँ, उसमें पहला सीन ही मेरा रेप का सीन है, तो क्या मैं 3 महीने और गोलियां मारता हूँ लोगों को? आई वाज बांग्लादेश की 71 का था, यू नो, आई वाज प्लेइंग अ पाकिस्तानी सोल्जर. तो वो क्या 1 महीना जो मैंने शूटिंग की, मैं रेप कर रहा था, लोगों को गोलियां मार रहा था, यू नो, वही एटीट्यूड से चल रहा था. अरे इट इज देयर इनसाइड यू, यू आर एन एक्टर, यू नो, यू ऑफ कोर्स यू फील इट. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट. आफ्टर अदरवाइज आपकी आवाज़ कैसे चेंज होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, आपकी आंख में कैसे दिखेगा, यू नो. बट आज तक स्टेज से कोई गिरा है? And when you're cinema, since we are talking about cinema, as an actor, there's so many tracks happening in your mind while you're shooting that, and you're into your character and scene. You know, आप आते तो मार्क पे ही हैं. जब कैमरा ट्रॉली पर यहाँ से यहाँ जाता है, even if you're doing a love making scene, you move with the camera, ना, because if lens can see you only, then that audience will see you. Right. एंड जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर लेंस देख ही नहीं रहा तो ऑडियंस देख ही नहीं पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो? तो इट्स अ लाइ कि मैं इतना खो गया था कि वो 4 महीने में वही इंसान था और वैसे ही बिहेव कर रहा था और वही सब कर रहा था, यू नो. वो सब उसको बनाने के लिए मैं कितना भी, कि जैसे आपने अभी बोला कि आप बॉम्बे गए तो मुश्किल होगी. अरे भाई, शहर चेंज करके जाओगे तो अडेप्ट खुद कर लोगे, ऊपर नीचे भी होगा. और ये वाला प्रोफेशन आप लोगे तो रोलर कोस्टर भी होगा, यू नो. होगा. बट ये आप कह रहे हैं 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद जब आप गए थे, तो आप यू प्रिपेयर दैट ओके, आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी टफ, और आई नो मैं किस में, मतलब आंख खोल के घुस रहा हूं. टफ होगा ये पता था, खुद आप चॉइस बनाया था. हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई आई वेंट. और क्या होगा ये नहीं पता था, यू नो. उस वक्त तो टीवी सीरियल्स भी नहीं थे जब हम गए. टीवी सीरियल बाद में शुरू हुए. और एक और सब, और हम तो सिनेमा भी वो सस्ता वाला कर रहे थे जो 8 जाने भी जा रहा हूँ 8 लाख 10 लाख में वो फिल्में बन रही थी. उससे पहले की इस तरह की एनएफडीसी की फिल्में 3.5 लाख में बनी थी, यू नो. सो how much you will get in one film? In fact, the money which we were getting even as a production assistant, production manager or actors, production assistant, you couldn't even survive those months with that money. But then you're thinking that I've come here, I need to spend some time. You're meeting people. और क्या होने वाला we didn't know. But that's the young age is all about, na? Yeah, taking risks. You know, you take risks. You just jump. You know, you're not always first testing the water with your toe. You jump. You take that risk. So what motivated you before Pawan Malhotra became an actor? What was that motivating thing that kept you going? No, I was doing theatre in Delhi. But theatre, तो like एक्टर तो थिएटर वाला भी एक्टर ही है ना. इनफैक्ट आई एम वेरी लकी दैट टुडे इफ आई कैन सिट हियर एंड टॉक अबाउट कैरेक्टराइजेशन एंड स्क्रिप्ट्स एंड ऑल दैट आई एम सेइंग ईच फिल्म इज फ्रॉम द स्क्रिप्ट इज समवेयर. एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई जॉइंड थिएटर समबडी टुक मी देयर, यू नो. फर्स्ट प्ले आई डिड सम 6 डिफरेंट कैमियोज. उसमें कुछ अच्छा किया तो दैट गाय रुचिका थिएटर आई स्टार्टेड विद. एंड फैसल अल काजी अनजाने में ही बाय डिफॉल्ट उन्होंने मुझे एक्टर बन गया, क्योंकि उसके बाद भी मुझे काम देते रहे, यू नो. एंड देन आई वेंट टू कॉलेज, देयर आई स्टार्टेड doing drama theater. आई वेंट फॉर फेस्टिवल्स, वहाँ अवार्ड्स मिलने शुरू हुए. फिर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, यू नो. इनफैक्ट फर्स्ट 2 years of Ruchika doing theater with them, 3 years, I didn't even know that NSD exists. For me, Kapru House was there because Children Film Society की फिल्म्स कभी-कभी हम देखने जाते थे. पेरेंट्स संडे को ड्राइवर के साथ गाड़ी भर के भेज देते. एंड उसके बाद बंगाली मार्केट.
त्रिवेणी, श्रीराम सेंटर, कमानी हमारे रेडार में ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ है, यू नो. सो एवरीथिंग it was a process. World. Things kept, unfolding for me. It was a new world for me. In my family, nobody was interested in art and theatre, A Punjabi refugee family, machine tools का business जो वहाँ से शुरू कर लिया. Of course, it's a business where you have to learn and you have to understand and you have to deal with the engineers and all. But they were not for me. My father was like, ये ड्रामे क्या करता रहता है यार, बिजनेस सीख, असली काम कर. टीवी पे आ गया तो 2 दोस्त आ गए, उनके अरे कल देखा जी ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ बड़ा अच्छा किया जी है वो, चलो पार्टी. पर leave it there only. Now you start your business. But when I started, I didn't know that I'm going to be actor who will be working on stage for so many years. Yeah, I'll be doing on stage, acting on stage. It just happened for me. And then films, I never thought of going to film. In fact, there was a time when I performed well on stage or I did something. हम street trade भी किया, जुलूस किया, घूमा किया. And when people used to say, अच्छा करता है बॉम्बे जा, तो I used to feel, मुझे फिल्मों में क्यों कोई काम देगा? Because I thought you need to be a big, tall, handsome guy like Amitabh Bachchan and Vinod Khanna and these kind of people we grew up looking at, and या फिर आपकी फिल्म वाले लोग होते families. वही आउटसाइडर तो क्या ही. हाँ, and बॉम्बे जाके, but in a process it happened, and I think that's why I keep saying God has been very kind to me, and I believe in destiny. Destiny took me there. I went with the play, and then I was offered this job, and somebody said, "अबे आना 4-6 महीने के नहीं अच्छा लगेगा वापस चले जाना. Give yourself a chance." So what you're destined to, but doesn't mean that leave everything और यहाँ सो जाओ. कर्म करना पड़ेगा. I always say, ऊपर से फल गिरेगा, खजूर गिरेगा, but you have to chew it well. Give your 100%. Pawan's a typical Punjabi, Delhiite, all of us, who believes never to give up. Mayapuri factory, so they will not give up. Refugees don't give up. Yeah. And that is, you see Shahrukh, he's from my school, 3 years younger to me. Myself, all people who've grown up right from subhash, they all have that Satish Kaushik, when we all sit down, so they have this ability to hustle and never be a loser and find positivity in negativity. Like your journey also, for that matter, you've taken such heavy risks and you've gained such immense success, and at the same time everything just wiped off in a day, and then you built it from scratch again. I'll just tell you a point again here. 14 years, I just produced one mega film and I acted in it. But 15, 16 years, I didn't do anything in the industry except for serials and my shows, 3,000. But that sportsman streak in Delhi, which I got, that was very important. वो आपको आज 1 साल में 4 फिल्म खत्म कर दी. इस अंदर सोचते हैं 5 साल में 20 फिल्में खत्म करनी और अच्छी फिल्में करनी उसी जॉनर की जिसके लिए अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड मिले, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. सोचें, सोच खाली दिल्लीite की. इन फैक्ट आई हैव बीन टू द होल कंट्री. जो जज्बा, हम दिव्या से बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये टॉपिक, जो जज्बा आज पंजाबी के अंदर है, नंबर 1 नहीं पे पहुंच के नंबर 1 बनना, वो शाहरुख में भी पंजाबी खूनी तो है. नहीं, नंबर 1 तो खैर किसी को नहीं पता होता. तो बनने का बोले ऐसा करेगा तो ये होगा, फॉर्मूला किसी को नहीं किसी को नहीं. हसल टू बी नंबर 1. पर देखिए, एस्पिरेशन सिनेमा तो महाराष्ट्रियंस ने शुरू किया इस देश में, कलकत्ता से ही शुरू हुआ था. बट यस, हमारी पंजाब रिस्क टेकिंग है. यस, मैं यहाँ पर रोकूंगा. I've been watching you right from Nukkad days to the other films that you've done. I think today, after that, yes, the work that you have done, even Bhag Milka Bhag and the other films, I don't think any Indian would have fitted into your role what you fitted. You molded yourself. But that's actor's job. No, it is not an actor's job. It is the passion of a ठेठ पंजाबी कि मैं कर लूंगा, मैं हुन करके देखूंगा. You get into it and you don't realize what you've done. Yeah, but the impact, they're non-Punjabi actors, they're very good, na? No, they are. But the jazba of that, see, India is counted morely as the Aryans, and North is considered more of India. Aryans wali theory, I don't agree.
ये झूठ है, कोई आर्यंस नहीं आए थे, वो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई बाहर से लोग आए थे, उन्होंने सिखाया और द्राविड़। पर भाई अगर आर्यंस बाहर से आए थे, मेरा लॉजिक ये है, आई डोंट नो, आई एम रेडी टू टॉक टू एनी हिस्टोरियन अबाउट इट, कि भाई कहाँ से पता चला, कैसे पता है आर्यंस आए थे। वो वाइट्स ने बोला ऊपर से लोग आए गोरे चिट्टे, उन्होंने सबको धकेल दिया। अबे कभी जो कॉन्कर करता है कोई जगह को आके, उनका रिलीजन कभी अपनाता है? यू नो, यहाँ नॉर्थ में सब मिक्स हो गया बिकॉज इतने इन्वेडर्स आए। पंजाब में तो बोलते थे खादा पीता लाहेदा बाकी है मशाहिदा, कि वो उसने ले ही जाना है। जितने लोग आए ऊपर से आए, साउथ उस मामले में बच गया। उनका हमारा म्यूजिक भी वहाँ प्योर कंपैरेटिवली बचा हुआ है, यहाँ भी है ऊपर, ऑफ कोर्स घराने तो यहाँ भी हैं, जो पाकिस्तान में इतने गा रहे हैं लोग, यहीं के घराने, पटियाला घराना, वो सब The heritage is still intact. डांस, यू नो, पूजा पद्धति यहाँ मिक्स हो गई क्योंकि इतने लोग आए ऊपर से। और इसीलिए मैं पंजाब में कहता हूँ कि भाई ये जो 2-3 सब्जेक्ट की कॉमेडी बना लो जी, या फिर 84 के टाइम का दिखा दो, और या फिर रिलीजन का, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। तो भाग मिल्खा भाग बनाने के लिए बॉम्बे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएगा, सरबजीत बनाने के लिए बॉम्बे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएगा, अभी वो सुनो बनाने के लिए बॉम्बे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएगा। एंड पंजाब इज अ लैंड फुल ऑफ स्टोरीज, full of stories, so much happened there, you know. But Punjab is also influenced, where we're talking, this show is about how actors influence and films influence. So I mean, if we're talking about Punjab, what are the kind of things which has influenced Punjab? What are the kind? Everything. Films, when I talk about films and actors who are influenced, आपको किस चीज ने influence किया था for you to become an actor? मैं तो पंजाब का नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ. My parents came from Lahore at the time of partition. Yes. Okay. Punjab in real sense I saw 5 years back, 4 years back when I did Punjab 84, and then I did that. And I felt very proud that my ancestors come from this land. रास्ता भी पूछो तो कहते हैं चाय पी लो, लस्सी पी लो. You know, there is something about that land. Welcoming, but big-hearted. Which also at the same time I would like to say, interiors mein wherever you go, like yesterday I took a cab and I was talking to the driver, you know, and he happened to be a farmer. I said, even when we were in UP shooting, भाई गन्ना ले लें, तोड़ ले, otherwise, and they'll tell you उधर से मत तोड़ना, 32 नंबर है, वो मिल में जाता है, ये खाने का है. So I was just telling him, without asking, if you take something, they'll come and kill you. Even if you take one, pluck something, you know. But if you ask, he'll say, the whole land is yours. वो हमारे जो शेयरिंग है ना, वो हमारे खून में है, हमारे सब जगह जाएंगे. लेकिन पंजाब में क्या हो गया, जो हमारे गुरुओं ने वो बोला ना, कीरत कर लुट दा माल कारने लाई बड़ा सुख पाएगा. और जो भी आए, क्यों निशान लगाया गुरुद्वारे के सामने, दूर से पता चले भाई यहाँ रात को रहने की जगह मिले और खाना मिलेगा. आप कोई भी आए, पुराना मेहमान को बोलते हैं, गिव हिम फूड इवन इफ यू हैव टू बोरो. दैट्स द कल्चर दे Adapted. somewhere. I'm not saying city people are not like that, you know. It's like when you go to hills, mountains में जाइए, they don't even lock their houses, कोई चोरी नहीं करेगा. But plains में आते ही जैसे हम रेस में पैसा ये वो, you know, you want to know which phone I'm carrying, what brand I'm wearing. That's how you decide what kind of person I am, whether to make friends or not, you know. But simple life, there is simplicity and more purity in people. Wow, that has been such a motivating, inspiring. इतना मतलब I'm charged out of this conversation with you कि जो भी लोग, मैं इतना बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ, but आपकी बातें, you don't have to be कोई भी स्टार नहीं होता. हमसे कोई ना कोई कभी भी हमेशा बड़े होते हैं. There's somebody bigger than you everywhere. Always. So you can never feel big because there'll always be somebody richer than you, smarter than you, prettier than you, blesser, luckier Destiny का than कुछ you. पता नहीं. माइकल जैक्सन with अरबों रुपए died with nothing in his stomach. That's why he died. So you don't know where destiny will take you. You know, there are people, किसी ने 4,000 करोड़ का स्कैम किया, किसी ने कोई फलाना किंग था, कोई ढिमकाना किंग था, वो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में मरे. भगवान कहाँ लेके जाएगा पता नहीं है. आपकी डेथ और टाइम कहीं तय है. सिर्फ ये हम तो हमेशा ये कहते हैं, चलते फिरते निकल ले. You know. So Aushim ji, we'll want you to conclude this episode on the conversation we've been having over here. What is the message that you will want to say to the viewers? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस ढंग से स्ट्रीट स्मार्टनेस से पवन ने बात करी है, आई रियली एंजॉयड इट. एंड यही जर्नी करते करते ही इज़ हैप्पी, ही इज़ कंटेंटेड. शक्ल पे अंदर से
रूहानी खुशी है for whatever he has accomplished, and there is that I'm happy with what God has given me, what nature has given me. This is the way. Continue. My humble request to all of them would be कि जिस मुकाम पे आपको परमात्मा ने भेज दिया है, नेचर ने आपको भेजा है, आप जितना कुछ सोसाइटी को दे सकते हो, जितनी सेवा कर सकते हो, जरूरी नहीं पैसे की सेवा है, आप 10 लोगों से प्यार से बात कर लेते हो, वो 10 लोगों को 1000 लोग तक पहुंच जाती है आवाज़, और वो जो आवाज़ है जो पहुंचती है वो इस कंट्री को बदल सकती है। आवाज़ ज़रूरी नहीं है पैसे से हो, आपकी सेवा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन मनी, योर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय योर वर्ड्स एंड गुड थॉट्स टू द पीपल who need motivation is very, very important. That's right. Thank you so very much, Pawan ji and Aushim ji have done to the entire audience, which is motivating them by their experiences, by their speech, and of course by their creativity. So whenever, and please take care of your mental health, your physical health, and definitely you will be charged just like these two individuals are. Thank you so very much. I am signing off. This is once again Aarti Khetarpal.